अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सोहेल। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की खबरें। ये खबरें बहुत मुनफरिद और सदाबहार है। ये बातें दुनिया के इंतहाई कामयाब और दौलतमंद लोगों ने हमें बताई हैं। इनको देखना और इन पर अमल करना हमारी कामयाबी की जमानत है। आए हम सब इन खबरों को देखें और अच्छी बातों पर अमल करके इंतहाई कामयाब हो जाएं। इस वीडियो में हम सबके लिए सीखने को बहुत कुछ है। इस वीडियो को आखिर तक देखना इसलिए जरूरी है कि हमारे इल्म में बेहद इजाफा होगा और हम बड़ी तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। अगर आपके पास सरमायाकारी के लिए वसाइल हैं तो रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना अच्छा रहता है। ये सोच ठीक है कि आप दूसरा मकान खरीदें या किराएदारों के लिए मकान हासिल करें और किराया हासिल करते रहें। अगर आप तहकीक करके सरमायाकारी करते हैं तो कामयाबी यकीनी होती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैकडॉनल्ड्स दरअसल एक रियल एस्टेट कंपनी है। मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट चेन पूरी दुनिया में फैली हुई है और आप सोचेंगे कि उनको अपना फायदा फूड इंडस्ट्री से मिलता है। उनको इससे तकरीबन 9 अरब डॉलर हासिल होते हैं। दरअसल 40 अरब डॉलर्स की वो रियल एस्टेट के मालिक हैं। Welcome to Washington America Show. You're watching Real Estate News. If you've got money to invest, investing in a real estate is always a good idea, whether to buy yourself another home in a luxurious place or just get a new condo. Find some tenants and collect rental fees. You almost can't go wrong as long as you do the proper research and plan your purchase wisely. You'll be surprised to learn that McDonald's is actually a real estate company. Since McDonald's is a chain with restaurants all over the world, you would think they get their profits from the food industry, while their take from the franchisees' food sales is around $9 billion. They actually own $40 billion worth of real estate. McDonald's has been struggling lately, and it would make a good economic sense if they started on trying to spend profits off of that $40 billion rather than hoping the trend of healthy eating goes away. Majority of you might not know where the top 10 richest real estate developers in the world are from. Top real estate tycoons have made millions and billions of dollars from buying, selling and developing this precious commodity. The real estate market can be very changing frequently. It's often one of the first markets to become unsteady in times of financial uncertainty, such as the global financial crisis. More than half of the real estate billionaires of the world hail from the Asia-Pacific region. Here, real estate is a burgeoning market. There is a fortune waiting for anyone with enough nerve to enter this fiercely competitive sector, because the biggest secret in real estate is staying the course while everyone else is jumping ship in a crisis. ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं कि दुनिया के 10 सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स कहां से हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स ने इस कीमती चीज की खरीदो फरोख्त से लाखों और अरबों डॉलर्स कमाए हैं। जब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के दौलतमंद तरीन रियल एस्टेट टाइकून्स दुनिया के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं तो आपको यकीनन फख्र महसूस होगा। जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है। एशिया पैसिफिक। Real estate investing, even on a very small scale, remains a tried and true means of building an individual's cash flow and wealth. The fictional story of a poor dad versus a rich one turned Robert into an overnight real estate investment advisor for the masses. Despite having his own ups and downs, his advice has encouraged millions to buy property. The best investment on earth is earth. Insofar as government lands can be disposed of, I am in favor of cutting up the wild lands into parcels, so that every poor man may have a home. In the real estate business, past success stories are generally not applicable to new situations. We must continually reinvent ourselves, responding to changing times with innovative new business models. The wise young man or wage earner of today invests his money in real estate. 90% of all millionaires become so through owning real estate. You are not buying a house, you are buying a lifestyle.
Too many people have said this over the years to attribute it to any one person. Buying a home is a great investment. Why? Because you can't live in a stock certificate. You can't live in a mutual fund. Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world. रियल एस्टेट सरमायाकारी बहुत छोटे पैमाने पर भी की जाए तो फायदेमंद साबित होती है। किताब रिच डैड पुअर डैड यानी गरीब वालिद अमीर वालिद में रॉबर्ट ने इंतहाई यूजफुल बातें बताई हैं। इन बातों पर अमल करके लोगों को बहुत फायदा हुआ है और रॉबर्ट रातों रात रियल एस्टेट सरमायाकारी का मुशीर बन गया था। इसकी नसीहत पर अमल करते हुए लाखों लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी करके कामयाब हो चुके हैं। जमीन पर बेहतरीन सरमायाकारी जमीन है। आज का अक्लमंद नौजवान जो तनख्वाहदार होता है वो रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना पसंद करता है। 90% से ज्यादा खरबपति लोग रियल एस्टेट में सरमायाकारी करके इतनी ज्यादा दौलत हासिल करते हैं। At a time when America's confidence in Wall Street and the stock market was at an all-time low, most successful investors told the American people to invest in real estate. The strength of a nation lies in the homes of its people. Find out where the people are going and buy the land before they get there. Every person who invests in well-selected real estate in a growing section of a prosperous community adopts the surest and safest method of becoming independent, for real estate is the basis of wealth. The major fortunes in America have been made in land. In any market, in any country, there are developers who make money. So I say all of this doom and gloom, but there will always be people who make money, because people always want homes. A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty. Look for the opportunities and ask why when you see things working for others. Today, the most successful people in real estate will begin to predict what people want. The best time to buy a home is always 5 years ago. Don't wait to buy real estate. Buy real estate and wait. Residential real estate should be an investment for every budget. Price is what you pay. Value is what you get. Keep calm and trust your realtor. The potential of a property is as good as the person investing in it. Don't wait for the right opportunity, create it. Buy land, they aren't making any more of it. Owning a home is a keystone of wealth, both financial affluence and emotional security. The more you know about your customers, the more you can provide to them information that is increasingly useful, relevant, and persuasive. I have always liked real estate, farmland, pasture land, timberland and city property. I have had experience with all of them. I guess I just naturally like the good earth, the foundation of all our wealth. ये वीडियो मेरी तरफ से उन सब लोगों के लिए तोहफा है जो कि कामयाबी की मंजिल तय करना चाहते हैं। इसको आखिर तक देखें और अमल करने से कामयाबियां हमारा मुकद्दर होंगी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। Progress always involves risk. You can't steal second base and keep your foot on first. Tough times don't last. Tough people do. Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. The major fortunes in America have been made in land. 90% of all millionaires become so through owning real estate. Believe you can and you're halfway there. He is not a full man who does not own a piece of land. The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd. Land is land, and it's safer than the stocks and bonds of Wall Street swindlers. Buy on the fringe and wait. Buy land near a growing city. Buy real estate when other people want to sell. Hold what you buy. Land monopoly is not only monopoly, but it is by far the greatest of monopolies. It is a perpetual monopoly, and it is the mother of all other forms of monopoly. A funny thing happens in real estate. When it comes back up like gangbusters. Real estate is an imperishable asset, ever increasing in value. It is the most solid security that human ingenuity has devised. It is the basis of all security and about the only indestructible security. What we call real estate, the solid ground to build a house on, is the broad foundation on which nearly all the guilt of this world rests. Property has its duties as well as its rights. If you do not like real estate, all you have to do is make hamburgers, build a business around that hamburger,
and franchise it. Now, one thing I tell everyone is learn about real estate. Repeat after me, real estate provides the highest returns, the greatest values and the least risk. रियल एस्टेट की इन खबरों से हमें इल्म दानिश से भरपूर चीजों से आगाही होती है। मैं अजीम सरमायाकारों की बातें आपसे बयान करता हूँ। उन्होंने साफ अल्फाज में दौलत हासिल करने के आसान तरीके समझाए हैं। हम सबको सिर्फ इन बातों पर अमल पैरा होकर साबित कदमी से अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा रहना होगा। हमेशा मुस्बित सोच की अक्कासी करना होगी और जरूरतमंदों से ताआवुन और उनकी मदद करना होगी। हम सब दोस्तों को तरक्की करने से रोकना मुश्किल होगा। Landlords grow rich in their sleep. Risk comes from not knowing what you're doing. We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Know what you own, and know why you own it. Go for a business that any idiot can run. Because sooner or later, any idiot probably is going to run it. Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world. ये खबरें बहुत मुनफरिद और सदाबहार हैं। ये बातें दुनिया के इंतहाई कामयाब और दौलतमंद लोगों ने हमें बताई हैं। इनको देखना और अमल करना हमारी कामयाबी की जमानत है। आए हम सब इन खबरों को देखें और अच्छी बातों पर अमल करके इंतहाई कामयाब हो जाएं। You can never solve a problem with the same kind of thinking that created the problem in the first place. A person who won't read has no advantage over one who can't read. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सोहेल। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट की खबरें। ये खबरें पूरी दुनिया में अपनी नौइयत की वाहिद खबरें हैं जो कि ना सिर्फ हमें गम और गुस्सा और नफ्सियाती अमराज से दूर रखेंगी बल्कि हमारे इल्म में इजाफा करेंगी। ऐसा इल्म जो कि हमें दौलतमंद भी बनाएगा। ये ऐन मुमकिन है कि हमारे पास पहले से दौलत हो। इन खबरों को सुनने और इन बातों पर अमल करने से हमारे इल्म और दौलत में इजाफा होगा। इन खबरों का मकसद तालीम को दुनिया में आम करना है। Every person who invests in well-selected real estate in a growing section of a prosperous community adopts the surest and safest method of becoming independent, for real estate is the basis of wealth. मकान खरीदना अजीम सरमायाकारी है क्योंकि आप स्टॉक सर्टिफिकेट में रह नहीं सकते, आप म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं रह सकते। रियल एस्टेट गुम नहीं होती, ना ही चोरी होती है। अक्लमंदी से सरमायाकारी करने से कामयाबी तकरीबन यकीनी होती है और दुनिया की बेहतरीन सरमायाकारी होती है। शुहर आफाक किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आप माली मामलात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। हमें मुसलसल अपनी सलाहियतों को समझना और इनको बरूए कार लाना चाहिए। वो लोग बिल्कुल आम से लोग थे जिन्होंने करोड़ों और खरबों डॉलर्स कमाए इन बातों पर अमल करके। इस वीडियो में हम सबके लिए सीखने को बहुत कुछ है, लिहाजा इसको आखिर तक देखना इसलिए जरूरी है कि हमारे इल्म में बेहद इजाफा होगा और हमारे लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। मायूस रहने वाला इंसान हर मौका में दुश्वारी देखता है, जबकि खुश रहने वाला हर मुश्किल में मौका देखता है।
सबसे मुनफरिद और मुफीद खबरों में से हैं, जो कि बैक वक्त उर्दू और अंग्रेजी में बयान की जाती हैं। इन खबरों में आपको तोड़-फोड़, गम और गुस्सा और तमानियत पसंदी नहीं, बल्कि सिर्फ दौलतमंद बनना सिखाया जाता है। अगर हम इन बातों पर अमल करें तो कुछ अरसे बाद ही तरक्की की जानिब गामजन हो जाएंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम सबका इल्म बढ़ जाए। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आए इल्म की दौलत से माला माल होकर रोशनियां फैला दें।